chance to speak about Cloudseekho Season 5 and GCP. Uh, Today in this session, I'll talk about Cloudseekho program, which is offered by Google Cloud to help the students and developers from all over Pakistan to learn GCP and cloud technologies and become a cloud engineer. So let me share my screen with you. Just give me a moment. I'm going to share the slide with you guys. I'm having an internet issue, so that's why it's taking a bit long. So, are you able to see my screen? Yeah, it's perfect. So, okay, so let's take a look at the agenda of today's session and let's take a look at the topics that will be covered in this session. Before that, let me just introduce myself. My name is Saad and I'm a student of BS Computer Science currently studying at International Islamic University of Ahmedabad. Uh, I've experience of working as a UI UX designer and recently I have delved into the field of computer cloud engineering and I have started learning it recently. So now let's take a look at the topics that will be covered in this session. First of all, we'll talk about what is cloud computing, then we'll talk about the role of cloud engineer and what is GCP, which is Google Cloud Platform. शायद आपकी आवाज़ में थोड़ा बहुत इशू है, या तो आप तेज़ बोल लें, या आई डोंट नो इफ़ योर फैन इज़ ऑन और व्हाटएवर, आपकी आवाज़ में बहुत शोर आ रहा है। So, is it fine now? आई थिंक इट्स द सेम एज बिफोर। Okay, let me take a look. Hello. या आपका बैकग्राउंड की आवाज़ ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा ऊंचा बोल लें, बाकी ठीक है बस। ओके, सो अब हम देखते हैं कि टॉपिक्स पे कौन कौन से हम टॉपिक्स इस सेशन में हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग अ लुक एट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग
Then we will talk about the role of a cloud engineer and what is GCP, which is Google Cloud Platform. And after that, I'll talk about the Cloudseekho program. Uh, and at the end of the session, I'll talk about how to build the netting stacks after completing the Cloudseekho program. So, first of all, what is cloud computing? Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources, including servers, storage, databases, networking, and softwares over the internet on as an uh, on-needed basis from a cloud provider. So uh, it basically means that cloud computing is just like renting computing power and storage online instead of owning and maintaining your own services. And it it allows us to access and use these resources over the internet, uh, which gives us a little bit more flexibility. So इसके बारे में आपको और डिटेल्स जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर जो पार्ट्स हैं और उनके अंदर जो कोर्सेज इंक्लूडेड हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा इफ़ आई मूव फर्दर देन why cloud computing? So cloud computing enables businesses and organizations to access and scale computing resources as needed, and it also minimizes the upfront hardware and other resources investments. And its flexibility allows quick adaptation to changing demands. Uh, it also gives you pay as you go model, which enhances the cost efficiency. Additionally, the cloud services facilitate collaboration and data accessibility, uh, which hence drives more productivity and innovation. So then let's talk about the role of a cloud engineer. इसके बारे में क्लाउड इंजीनियर और इस तरह की डिटेल्स के बारे में आपको जो है वो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी डिटेल्स के साथ उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से आई वुड नॉट से दैट यू कैन बिकम अ क्लाउड इंजीनियर, बट यू कैन गेट ऑन दैट track to become a cloud engineer. So, the role of a cloud engineer is that cloud engineer has to deploy and debug and execute the initiatives which are related to cloud computing. Okay, so he has to design and develop and also maintain the cloud-based systems for different organization or client, whatever he's looking for, uh, to ensure the uh, efficiency of the data and its storage and security as well. So he also has to interact with clients to provide cloud support during the project or his tenure. So uh, he also has to make the recommendations throughout. So now uh, let's talk about Google Cloud Platform, GCP. So GCP is a suite of cloud computing services provided by Google, uh, which offers a wide range of infrastructure and cloud platform services, including computing power, storage, databases, machine learning, and analytics. It also enables businesses to build, deploy, and scale applications efficiently in a flexible and secure cloud environment. So GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ऐसी सर्विस देती है, इंटरनेट को एक तरह से पावर देती है। GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इट्स वन ऑफ द पॉपुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड। जैसे आपका या मेरा अपना पर्सनल कंप्यूटर है, उसके अंदर रैम है, CPU है, कुछ GPU है, और उसके साथ आप कई काम और कंप्यूटिंग पावर कर सकते हैं। उसी तरह से गूगल क्लाउड अपने मेगा डाटा सेंटर्स की हेल्प से आपको
बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है। आपको 1 GB रैम चाहिए या 1000 GB रैम, एक TB डाटा चाहिए या फिर 1000 TB डाटा, गूगल क्लाउड आपको सब कुछ ऑफर करता है इंटरनेट के थ्रू। सो GCP इतना मैजिकल इसलिए है बिकॉज there are three things which makes it such powerful: scalability, flexibility, and cost effectiveness. So स्केलेबिलिटी, इफेक्टिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में आपको इसके अंदर भी बताया गया है प्रोग्राम के अंदर। थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक आपको एक ब्लॉग शुरू करना है जो 10 लोग पढ़ेंगे, या आप तो आपको गूगल क्लाउड पे कर सकते हैं। या आपको ब्लॉग 10 लाख या 1 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म उसको भी हैंडल कर सकते हैं। जितना यूज़ करेंगे उतना हम पे करेंगे। GCP हैज़ समथिंग फॉर एवरीथिंग। GCP has around like 100 services in its menu, and it keeps on updating and adding new ones, uh, which are useful for everyone in one way or the other. So all of them are different, and they have different roles and unique in one way or the other. So लाइक कंप्यूट पावर से लेके डेटाबेस तक, या फिर अनलिमिटेड स्टोरेज से लेकर AI IoT तक, जो भी चाहिए GCP हैज़ समथिंग फॉर एवरीवन। You can use, I'm just giving an example of the services which are provided in the GCP. Um, आप EC2 machines को यूज़ कर सकते हैं to get virtual machines, right? So a machine in the cloud that never goes out of power, एक ऐसी मशीन जो कभी भी बंद नहीं हो सकती। So you can also get the Lambda service to just run your code directly. So उसके उसके अलावा जो GCP की बेस्ट थिंग है that is their pay as you go model, which means कि आप जितना यूज़ करेंगे उतना पैसे देंगे, मतलब आप उतना पे करना पड़ेगा। अगर आपकी ऐप पर ट्रैफिक जो है वो कम है तो आपके पैसे बचेंगे। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो you can handle the traffic spikes using auto scaling. Auto scaling is a feature which is provided in GCP. इसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स जो है बड़ा कम्प्रिहेंसिवली उन्होंने बताया हुआ है प्रोग्राम के अंदर, जो कोर्सेज हैं उनके अंदर। सो मतलब ये कि यूज़र हैज़ टू पे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द यूज़र। इसका मतलब सिर्फ ये है पे एज यू गो मॉडल का। सो उसके अलावा नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ Cloudseekho सीजन 5। वहाँ पे जाकर लेट मी जस्ट चेंज माई स्क्रीन। I hope that everybody can hear me. So this is the page of Cloudseekho सीज़न 5। यहाँ पर आके आपको रजिस्टर करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी अपना जो है पिछले अकाउंट से जो मेरे पास अकाउंट है गूगल का, उससे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। तो इस पर जब आप आए तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि Cloudseekho इज़ एन ऑनलाइन Google Cloud self-study program that provides developers in Pakistan with access to hands-on Google Cloud Labs। Google Cloud Labs जो है वो एक तरह से आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करती हैं और आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इनको करके। वैसे ये जो लैब्स हैं दीज आर पेड, लेकिन जो ये प्रोग्राम है इसके थ्रू आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और इनको कंप्लीट करके आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे और आफ्टर दैट यू कैन गेट दी सर्टिफिकेट एंड दी स्वैग। तो उसके बाद है भाई हम हियर, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई शुड यू पार्टिसिपेट इन दी Cloudseekho। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यू कैन लर्न GCP और गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट
गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट जो है ये इनका अपना गूगल क्लाउड का ही एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ये लर्निंग स्किल सोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर वेल डिज़ाइन कोर्सेज हैं और हैंड्स ऑन लैब्स भी हैं जो कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे इन चीज़ों के बारे में। इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो 30 डे की सब्सक्रिप्शन मिले और आपको जो है वो फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे टू एक्सेस दी लैब्स एंड ऑल्सो टू गेट द सर्टिफिकेट। सो इसके अंदर जो है स्टडी मटीरियल की हम अगर बात करें तो यहाँ डेजिग्नेटेड स्टडी मटीरियल जो है उसके अंदर बेसिकली टू पार्ट्स इन इट। दी फर्स्ट वन इज गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन। इसके अंदर you will fully learn the basic services on the GCP, which includes the cloud platform basics and Google Cloud Basic Platform Services, Google Cloud Network and Security Services, Google Cloud Data and Machine Learning Services. And if we talk about the second part, इसके अंदर its name is Generative AI Series। इसके अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन टू AI and ML on Google Cloud है और उसके बाद जनरेटिव AI फंडामेंटल्स है और जनरेटिव AI स्टूडियो है और वर्टेक्स AI। वर्टेक्स AI एक गूगल का ही अपना एक प्रोडक्ट है जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। और जो फर्स्ट पार्ट है इट्स लेंथ इज़ अराउंड 30 आवर्स और जो सेकंड वन है इसकी 2 घंटे। तो जब आप एक पाथ को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 8 बैचेस मिलेंगे और दूसरी पाथ को कंप्लीट करने पर आपको 4 बैचेस मिलेंगे। एंड उसके बाद अगर हम स्लैक्स की बात करें तो स्लैक्स की एलिजिबिलिटी ये है कि टीयर 1 के अंदर you have to get 4 badges from the designated material and then you will be able to win a laser pen and a sticker sheet. And if we talk about the tier 2, you have to get 4 badges from the designated materials and then you will be able to win a laser pen, a sticker sheet and a t-shirt. And in the tier 3, when you get 12 badges, 12 badges आपको तब मिलेंगे जब आप सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। देन यू गेट दी लेजर पेन, स्टिकर शीट एंड टी शर्ट एंड अलॉन्ग विद द यूनिवर्सल चार्जर एंड आर लैपटॉप कवर। सो अगर हम यहाँ पर तो let me just change my tab that you can see। तो पहले पार्ट्स को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर जो है पहले पार्ट्स के अंदर देर आर 8 कोर्सेज विच आर इंक्लूडेड इन। सो इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं और हर कोर्सेज के अंदर डिफरेंट आपको लैब्स मिलेंगी और उसके साथ आपको स्टडी का मटीरियल भी मिलेगा और हर कोर्स को कंप्लीट करने पर आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और एट द एंड ऑफ दी पाथ उस पर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सो इसके अंदर हम देखें वंस यू कंप्लीट दी पाथ तो उसके बाद इसके अलावा 700 और भी लैब्स हैं इसके अंदर इस पाथ के अलावा। लेकिन अगर मैं आपको एक पाथ का एक कोर्स ओपन करके दिखाऊंगा ये जितने भी इस पाथ के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो बिल्कुल बिगिनर लेवल के कोर्सेज हैं और एनीबडी कैन डू दैट, एनीबडी कैन जॉइन एंड कंप्लीट दिस पाथ। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्टरी पेज है। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने आप सीखेंगे इसके अंदर। लेट मी जस्ट साइन इन माय अकाउंट। मैं इसको साइन इन करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप टैब को किस तरह। ओके सो आई साइन इन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये पाथ जो है ये कोर्सेज कंप्लीट किए हुए हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको इस साइड पे आपको यहाँ पर जो स्टडी का पीरियड है वो इसके अंदर there are 4 modules in it, and in each module there are videos and also quizzes and labs as well. ये आपको एक पहली लैब यहाँ पर मिलेगी टूर ऑफ गूगल टूर ऑफ गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब्स. सो अगर आप इसको केयरफुली करें तो आपको यू कैन लर्न अ लॉट. मेरा इंटरनेट का इशू आ रहा है तो उसको भी let me just reload notification. See if it works. There is an internet issue at my end. Can you hear me? Yes, we can hear you. I'm having an internet issue. Okay, so I'm having an internet issue. I don't know why it's not working. Please give me a moment. Okay, so now it's working fine. Let me share my screen again. Very sorry for the inconvenience. अभी भी ये मुझे स्पष्ट कर रहा है. I don't know why. सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने डिफरेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं लैब के अंदर और आपको बताया है कि लैब के अंदर कितने क्रेडिट हैं. क्रेडिट से आपका यू आर नथिंग टू डू विद इट राइट नाउ. सो इसके अंदर आप नीचे आएँ तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टास्क दिए गए हैं और आपको ईच टास्क कंप्लीट करने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे. तो जब आपके यू हैव डन 100 पॉइंट्स तब आपका मतलब इसका होगा कि यू आर डन विद द लैब एंड यू हैव फिनिश्ड इट. और उसके बाद आप इसको एंड कर सकेंगे. लैब को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट लैब का बटन दिया गया है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी. साथ इसके ऑन द लेफ्ट यू हैव द पैनल वेयर यू कैन सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द लैब कि इसकी टाइमिंग क्या है. इसका टाइमर लगा हुआ है और ये टाइम को काउंट करता जाएगा और 45 मिनट्स में ये लैब एंड हो जाएगी. और
कोई 30 मिनट्स के अंदर है, कोई 1 आवर के अंदर है और कोई 20 मिनट्स की है। तो इसके अंदर जब आप स्टार्ट लैब कर लेंगे तो आपको जो है वो आपको एक यूज़र नेम दिया जाएगा और उसके साथ आपको एक पासवर्ड भी दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको ओपन इन गूगल किया जाएगा। जब आप ओपन इन गूगल कंसोल करेंगे तो आपका एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा गूगल क्लाउड के अंदर उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ जो आपको यहाँ पर एट द लेफ्ट आपको दिया गया होगा। सो वो यूज़र नेम और पासवर्ड को सेव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट वुड बी डिफरेंट फॉर ईच लैब। सो उसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो इस लैब डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में, टास्क के बारे में और इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। और इसके अंदर उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको क्या क्या करना है, किस बटन पे क्लिक करना है और उसके साथ आपकी जो है ना लैब ईजीली हो जाएगी। और इसके अंदर क्विज़ भी इंक्लूडेड है, क्विज़ लाइक मिनी क्विज़ जिसके अंदर एक दो एमसीक्यूज हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह का जब आप स्टार्ट लैब करेंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पैनल आ जाएगा और उसके साथ आप जब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपका जो लैब है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ यू डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली, अगर आप केयरफुली उनको रीड नहीं करेंगे और यू कैन मेक पॉइंट ड्यूरिंग द लैब और उसके साथ फिर आपको लैब को फिनिश करने में मसला होगा। और जब यू आर डन विद वन टास्क देन यू हैव टू यहाँ पर आपको बटन आ रहा होगा, मेरा पेज अभी हैंग कर रहा है तो नहीं आ रहा। यहाँ पर चेक दी असेसमेंट का बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि आपने टास्क फिनिश कर लिया है या नहीं। जब आप इंस्ट्रक्शंस पूरी की पूरी फॉलो कर चुके होंगे और उसने जो टास्क दिया होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको वो बटन प्रेस करना है और उसके बाद इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दैट वेदर यू हैव कंप्लीटेड द टास्क और नॉट। और उसके बाद जब आपके 100 पॉइंट्स हो जाएंगे तो उसके बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दी एंड टैब बटन। अभी यहाँ पर स्टार्ट लैब बटन आ रहा है, उसके बाद जब आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद एंड लैब बटन आ जाएगा तो उसको आप एंड करेंगे तो वो लैब फिनिश हो जाएगी। मेक श्योर टू एंड द लैब बिफोर leaving it, otherwise it will not be finished. Okay, so that was it about the Google Cloud Skill Boost, and if you have any question then please feel free to ask me. All right, thank you, Saad. If anyone have any question, please turn on your mic and ask it, or you can simply write it in chat. You might face let me add one point, आपको शायद लैब के दौरान कोई जो है वो एरर्स फेस करने पड़े, उसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आप एक लैब को एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक यू कैन नॉट डू इट फॉर लाइक मोर देन 4 और 5 टाइम्स। उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो लॉक कर दिया जाता है। सो मेक श्योर टू prepare fully before starting a lab and then complete it.
Alright, अगर किसी का कोई question नहीं है, we can simply end this session. Thank you, Saad. Thank you for this informative session about cloud. There was a lot of thing to learn. Alright, we can simply just end this session. Thank you everyone for joining. Thank you, Saad, for this informative session. Thank you.